in terms of academic diversity, I'm saying. So that's one of the reason compared. Yeah, go ahead. One second. Okay, 1 second. I think he dropped. मेरे ख्याल से I'll try to kind of get him again. Guys, sorry for this. Give me 30 seconds. I will be right back. Okay. Okay, Yeah, fair. sorry, I had some technical issue No, that's on okay. my That's end. okay. That's okay. Chalo, let's get started with these things. Okay, fine. So those who've not got the calls, there might be a couple of reasons, and the reasons would be definitely because maybe you've not been able to get that composite score done and dusted or something like that. Again, diversity is also something that would matter a lot as far as IIM Ahmedabad is concerned. So there are kids I know they did not get a call at 99.98, 99.95, 99 point something. Again, जब भी मैं कहता हूँ एबीसी के बारे में जब भी हम बात करते हैं, आई एम ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन कि एबीसी में ना बहुत ज्यादा उथल पुथल होता है. इट्स नॉट गोइंग टू बी रियली श्योर कि आपको आ ही जाएगा. द वे वी काइंड ऑफ श्योर फॉर न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स, और प्रॉब्ली वी कैन बी रियली श्योर अबाउट लखनऊ, कोझिकोड और इंदौर. तो थोड़ा यहाँ पे ये चीजें हो जाती है. कूल है. वी नाउ बिगिन विद द सिलेक्शन क्राइटेरिया. रादर आई सॉर्ट ऑफ जंप ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. Kevin, this is for your reference, by the way. ठीक है, cool है. So we start with this. Now this is where you all need to focus from now onwards. If at all you have a call from IIM Ahmedabad, and this is going to be your last stage. Kevin, any thoughts on this? How can they do better in this the last selection criteria? Okay, so I can see 0.50 is for personal interview and AWT is 0.10. It's same. In my year as well, it was the same. So around 60% weightage is to the portion which is going from now onwards. Till now, 40% you have already reached. So this 60% is very important. आपको जो ये AWT दिख रहा है 10%, it's लगता है it's 10%, but what I have observed in my personal opinion is when you go into interview, your interview may start with AWT. In my case as well, this is the first impression they get. You go into your interview, they will have your answer sheet, they will read your AWT, that is analytical writing test, and your discussion may start with that. So take this 60% as the whole factor. Do not only prepare for interview. That's what I had also seen many of the past aspirants doing that. Also focus much more on AWT as well. Take these as a whole exercise. ओके, सो मोस्टली तुम्हारे जो इंटरव्यूज होंगे ना वो मेरे ख्याल से ऑफलाइन होंगे. तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है अपनी, वहां पे आपका सिलेक्शन रादर आपका एक सेंटर होगा. मेरे ख्याल से दिल्ली होगा, बॉम्बे होगा, पुणे भी होना चाहिए. सो व्हाट हाउ डज इट हैपन इज बेसिकली they'll be booking a 5-star होटल मेरे ख्याल से दिल्ली में, बॉम्बे में, कहीं ना कहीं. एंड देन यू हैव टू ट्रैवल, राइट. सो सबसे पहला आपका होगा AWT, राइट. सो तेरे टाइम पे कैसे था? वाज इट ऑनलाइन और ऑफलाइन? कैवल Offline. For me, it was also offline. Although I was in COVID time, but still it was offline. कोविड के टाइम पे मेरे ख्याल से 2020 में Ahmedabad was the only B school who did. Ahmedabad was the only one which had offline. Perfect है. So guys, once you walked in ना, you'll be helped by the students out there, और maybe जो भी वहाँ पे representatives रहेंगे. आपको VAT लिखने के लिए एक piece of paper दिया जाएगा. सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये देखनी है आपको कि VAT अगर आपको one piece of paper दिया जाता है, that is only to write VAT. Then you will have some extra sheets, rough sheets and something like that. You will not be able to use those sheets as the sort of a thing to write your VAT. So it's going to be only single paper. केवल तेरे टाइम पे ये था या इसमें Yeah, I will explain the whole process. So हाँ, you all will be taken to a single auditorium kind of room, let's say.
वहां पे you will be given a single sheet of paper around 20-25 lines for that page. You have to use only those particular lines to complete your entire AWT. I was given around 20 minutes to do that. Few things that you have to focus is, first of all, uh, कुछ भी गलत मत लिखो, so that you have to cut down and those things do not look that good. Second thing is, you should plan in a way that you are able to complete in that page. Like it should not look like you ran out of your thoughts, you ran out of the pages. uh, you should be much more organized when you are writing your VAT. After you are done with those 20 minutes AWT, then panels आपको allocate किए जाएंगे. Let's per panel around 5 to 6 people, and one by one interviews will get done. In the particular interview panel, there will be around 2 to 3 people, two professors, both from different both from different area. Let's say one can be from finance, one can be from organizational behavior, something, anything can be done, and one can be alumni as well. Alumni is optional, but at least in Bangalore interview, I had seen alumni was there. Ahmedabad as well. Some of my friends also mentioned that alumni might be there, and the questions and all will be related to like Ahmedabad people. Interview will be in detail. It's not like they want to test you out. They want to check that you are good, or they want to test you in detail. It's not like anything random or anything. Interview, it can be 25 to 30 minutes you can take on an average. Okay, fair. So let's talk about how AWT is different than VAT, because सबसे पहला चीज वही दिमाग में आता है कि सर यहाँ पे तो AWT लिखा है, हमको तो लगा था VAT आएगा. सो कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं और किस तरीके से AWT को प्रिपेयर करना है. दो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स in much more detailed manner once we get inside the Zoom sessions. When GDPI event starts on Monday, you'll be having these sessions, so don't worry about that. But just get a fair idea as to how this AWT is a little different than the VAT that we conduct across other 19 or 20 IIMs. And Ahmedabad में क्या होता है? क्या ले wanna put some light on this AWT के लिए? Yeah, maybe I can explain you on a higher level. So perfect, man. You are a yeah, big guy now. so in a VAT, VAT is more open-ended. Let's say, how is India doing in World Cup? काफी open-ended है. You can write anything. But AWT is much more closed, and also it's very much logical. Like for a similar statement, AWT statement can be India won this many matches in till semi-final in World Cup. How it can go further in the final? Write your explanation. Explain something. So you will be given a fact of statements that this has happened. How is your future view building on that? So here your comes what is your analytical based on the data that you have been given. Now you will have some arguments, let's say positive arguments, negative arguments. You will support it with facts and figures, and then accordingly you build your AWT. And in AWT, it's not like normal VAT. VAT is more open-ended, so you can write anything. But in AWT, it should be to the point. That's the reason you will be given only a single page. All your arguments and all should be very much structured. If you want to know more about AWT, probably you can search GMAT AWT. It's more or less 99%, I would say, similar to the ones GMAT is conducting. So from there, you can get a pretty fair idea how is AWT different than VAT. Perfect. And if you are with C2C, that's what he said about the free resources. If you are with C2C, what you can do is you can check the dashboard. जहाँ पे ईशा जो है, ईशा निशार, I think she was your yeah, she was my senior. ठीक है. So ईशा ने ना, yeah, she explained in very good detail. That video was really good. So you guys can go ahead and check that video. She'll be also meeting you guys very soon. Rather tomorrow she's going to be meeting you all at 8 p.m. एक बारी वो video देख लेना. That's the Bible for AWT. And then couple of sessions probably Kevin will take in the future. Gaurav will also be taking in the future, including Manohar and me.
तो वहां पे वो आइडियाज बनते जाएंगे. द वे आई लुक एट AWT इज मोर इंटेंस. जैसे इसने कहा कि इट्स वेरी क्लोज एंडेड, इट्स प्रीटी नैरो, wherein you need to be very much sure what you're writing. आप haywire नहीं जा सकते हो. You got to stick to the point, write up to the point, put in the facts, figures, arguments and assumptions. पूरा critical reasoning यहाँ पे shape दो जितना भी आपने सीखा है on a GMAT level. And more of what they are looking at as a panelist is that how is your thought process? Are you really sure whatever you have been writing? Are you backing it up with the examples, with the facts and figures? So एक clarity of thought होना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है. So probably जब मैं AWT के बारे में बात करता हूँ, the pestle analysis won't work here much, but yes, you having an understanding would help you a lot. How are the topics? What were the topics during your time, Kaivalya? AWT ka, if you can mention a couple of them, if you remember. It's 3 years now, but yeah, if I remember, my topic was I was given a data. Let's say India में viewership of the TV channels was around 70% pre-COVID. During COVID, ये अब 30-40% आ गया है. After COVID, what are your opinions on this? So data was given, and accordingly, I had to build up the whole analysis. So इसमें फिर you can bring the point of OTT and all, and you can also plan how they can increase. So your opinions with backing of data will be much more valued. Also, AWT, I would say, is very much structured. So you have a proper format कि मतलब अच्छा मुझे पहले ये वाले आर्गुमेंट बिल्ड करनी है, मुझे ये वाले आर्गुमेंट बिल्ड करनी है. सो फॉर मी इट वाज easier than that. It depends on person to person, but I would say do not get much scared by AWT. It's pretty much doable if you follow it through. ओके, फेयर है, फेयर है. एंड हाँ, एक चीज है कि जहाँ पे हम बात करते हैं ना कि वैट के बारे में, आई थिंक वैट का ना एक आध टॉपिक भी होता है, जस्ट वन लाइनर होता है. बट AWT में आपको भर भर की चीजें दी जाएगी, मतलब प्रॉपर आपको डेटा वेटा दिया जाएगा विच यू हैव 3 to 4 lines you can say. हाँ, आराम से वहां पे आपको थोड़ा बहुत हेल्प भी होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट AWT. We'll turn to the most important part. So this AWT will constitute 10% of your entire selection process. Now, whatever has happened, to be very honest. You can go back and check why you did not get a call and whatsoever. But if you've got a call, now just focus on these three things जो केवल ने बोला है. ये 10% and ऊपर का 50%, जो 50% तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नीचे वाला जो आपको 40% है, आई थिंक दैट इज मोर और लेस वो सॉर्टेड ही है. Now we'll talk about the interview things. Before that, we'll just talk about the sort of badge profile. Now you've been there, Kaivalya. You have seen the entire IIM Ahmedabad. अब मैं ज्यादा secrets नहीं यहाँ पे disclose करूँगा. But yes, you know a lot of stuff. This is the badge profile that we have. पहला question ना जो बच्चों के दिमाग में आता है is that, sir, I am a fresher. Will I be able to crack IIM Ahmedabad? So I was also a fresher. अरे हाँ यार, मैं तो भूल गया यार. Seriously, Yeah. fresher. Cool. Yeah, and if you see 23% and 12%, 35%, around one third people are can be considered as freshers. So 1 out of 3, pretty much good, doable. Perfect. So freshers को कोई load नहीं है आज, मतलब freshers can get through. ठीक है. Another thing, IIT, NITs and BITS. यहाँ पे इन लोगों ने BITS भी mention करा है. बहुत कम कॉलेज है तो BITS डालते हैं, but I'm really happy to see that because you're from BITS Pilani. So यहाँ पे BITS भी mention करा है. Is there any specific weightage given to the IITs, NITs and BITS with respect to any hidden stuff for all the IIMs? No, not anything from hidden stuff as well. Like whatever is there, those 40% is pretty much transparent. They do not give any specific weightage, anything additional points, anything to IIT, NIT or BITS or any premium colleges. Okay, fair. But it helps you. Yeah, it may help. Like it may help you to get the initial your image in the interview. But apart from that, whatever is there, it's your own caliber. Even if you are not from a premium institute, it does not stop you to get into IIM. That's what I would say. Indeed. मतलब है बच्चे इग्नू वगैरह की भी है, पुणे यूनिवर्सिटी वाले हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी वाले हैं, so definitely yes. Yeah. No doubt about that. Thanks for bringing that to the table, man. What about CAs यार? CAs तो काफी भर के हैं अहमदाबाद में. CAs definitely. If you have let's say under 50 का rank, then I would say कि आपको कोई नहीं रोक सकता IIM अहमदाबाद जाने से. Under 50 ना? Under 50, 50. Perfect.
I know there are a lot of kids, say rank holders like rank number 9 Yeah, and 5 and 10, 11 and 12. उनका तो फिक्स है, मतलब unless you do a much more big some blunder or anything, अब उसके अलावा तो you are definitely going to be there. He meant to say if you do a big fuck up, Yeah, then तो तुम्हारा नहीं होगा. Otherwise, you have a smooth entry in IIM Ahmedabad because CS के लिए एक अलग level है. आप also want to ask, like, for the fact now this video will be viewed by a lot of people out there on social media also. I wanted to understand कि जो chartered accountants होते हैं, right? Do they eventually make it to the Goldman and Deutsches of the world and yeah, Morgan? yeah. अरे, chartered accountants with rank holder, they are like favorites among the IBs, Ah, consulting firms, MBBs and all. right, right. Definitely. See, I know that stuff. It's just that when you tell them, no, because you fresh pass out, वो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है. So यार, एक आपके लिए भी जगह है. Chartered accountants with rank holder, you have that sweet spot. Goldman, Morgan, Deutsche, private equity, venture capital, and सीधा आपको मार्केट का प्रोफाइल मिलता है. 2-3 साल वहां पे रुको, अच्छे से काम करो. उसके बाद you will move out. You'll get some long term assignment, LTS that we call it as. You'll be posted to Singapore, NY, London, London. फिर आप कभी इधर नहीं आओगे. फिर तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है. So that's what you can gun for. Cool है. So now let's go back to the main topic of the day. पर्सनल इंटरव्यू क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, डजंट मैटर. आपको IIM अहमदाबाद की कॉल है या फिर किसी और IIM की कॉल है, व्हाटएवर इनसाइट्स वी गोना बी शेयरिंग इन दिस वीडियो, मेक श्योर दैट आप उसको ढंग से फॉलो करो. इट विल हेल्प यू लॉट. यस, क्या बोले PI. Yeah. For personal interview is very much similar to the personal interviews that you will be having in other colleges as well. Uh, First part is your initial HR questions like what is your profile, what about you, what is not there in your resume, basic questions that will start with your interview. Once you put something, let's say they ask explain yourself, which is not there in your resume, let's say, then whatever you speak about, it will follow up the discussion with that. अगर आपने बोला कि लेट्स से मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे मूवीज देखना पसंद है, so they will have a detailed discussion over that. So IIM Ahmedabad ke interviews are more like they go into the detail and check if you are sure whatever you are mentioning. मतलब आपने अगर कुछ बता दिया कि लेट्स से मेरा इकोनॉमी पे ये व्यू है कि इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो विद दिस, तो दे विल टेस्ट आउट कंप्लीटली. अच्छा, उसका अजम्पशंस क्या है, व्हाई डू यू थिंक दैट, व्हाई डू यू नॉट थिंक दैट. तो accordingly it will go. So what you can prepare, first is your HR questions, second is general knowledge, third is academics, undergrad के academics for engineering or commerce, whatever you have. And yeah, apart from that, fourth thing is what are your aspirations, like 2 years down the line, 5 years down the line, 10 years down the line, what you want to do out of your MBA, why do you want to do an MBA. They want that particular clarity in your answers. Okay. Is this same thing for FABM also या फिर FABM का कुछ अलग होता है? No, FABM also have the same thing only. Just their answer should more align why they do want to do an FABM MBA. Yeah, True. agriculture. So Now, okay, so as you said rightly कि ये chill level पे चलेगा, उसमें मतलब आपको सीधा grill नहीं करेंगे, right? no. So I would say go with this mindset कि people think कि वो select करना है. What I will say, वो just ये देखने के आया है कि are you making any blunders कि मैं आपको select ना करूं. They want कि उनके पैनल में अगर 6 लोग आ रहे, they want to select all 6 people. Unless you do a mistake, unless you are not that good, only then you will get rejected. So go with this positive mindset. That's what I would say. Yeah. Okay. Now, a couple of things will make a mention कि यार IIM अहमदाबाद का जो इंटरव्यू होता है, everybody somebody, हर कोई तोहफी होता है वहां पे. मतलब 1500 जो है वो बेस्ट माइंड्स है कंट्री के, राइट? जहां तक इंट्रोडक्शन वगैरह का सवाल है, how they should be going ahead with that. If they have a lot of achievements on their resume, मान लो SRCC है, BITS है, नेशनल विनर है, चैंपियन है, how can they put it across so that वो ज्यादा मोनोटोनस ना लगे और ऐसा भी ना लगे कि भाई ये बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा है. I'm very sure you must have came across these kind of scenarios very well. How do they start with their introduction or something like that? For introduction, I would say कि keep it more natural, more honest, whatever you have. And
somehow bring something which may interest the panelists, because those are normal professors and उनकी लाइफ भी काफी ज्यादा मोनोटोनस हो चुकी होती है. सो दे कम विथ दिस माइंडसेट कि चलो ठीक है, पीआई में थोड़ा मजा आएगा. सो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इफ यू हैव इन योर लाइफ, लेट्स से यू आर इनटू सिंगिंग और समथिंग, keep it, bring it in your introduction. Do not make it much more monotonous or much more like वो टिपिकल हमारा वो फॉर्मल इंट्रो नहीं होता कि मेरा ये है, हाँ मेरा हाँ ये है, हाँ वो वाली चीजें मत लाओ. हाँ मैं इनको यही कहता हूँ ऑलवेज कि भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ एंड थोड़ा लेट्स से मेक इट लिटिल यूनिक. या नाउ मेक इट लिटिल यूनिक टू योरसेल्फ. या नाउ टेल मी, ये यूनिक का जो पॉइंट है ना वो बहुत लोग नहीं बताते हैं, है ना. और सिद्धू सी वाले मैं रहूं तू रहे गौरव रहे मनोहर रहे, लाइक ऑल द पैनल जितने भी बच्चे हैं सब कहते हैं कि कुछ नया बनाओ, कुछ यूनिक बनाओ. आई वांटेड टू टेल देम कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, बिकॉज अगर जब बस जाके मैं कहूँ मेरा नाम केतन है, मैं बॉम्बे से ब्ला 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 फलाना वाला नाम, and then if I'm not being unique, if I'm not bringing something which is interesting in my introduction, वो कैसे खेलता है? Because you've handled Placecom also, so you know the stuff कि बच्चे जब इंट्रोडक्शन देते हैं तब वो कैसे साउंड करता है. एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट दे देना. नीड सम व्यूज ऑन दैट. या सो द आई विल गो विद द कैंडिडेट माइंडसेट कि वो क्यों अपनी यूनिकनेस नहीं ला पाते. बिकॉज हाँ. दे नो देयर व्हाट दे आर अप टू, बट उनको ये नहीं पता होता है कि उनमें क्या यूनिक है. हाउ दे कैन डिस्कवर दिस इज गिव मोर मॉक इंटरव्यूज. मतलब लेट्स से केतन सर के साथ आप बात कर रहे हो, समटाइम्स ही विल फिगर इट आउट कि आप में क्या यूनिक था, या फिर ये चीज है कि जो मेक स्टैंड या फिर मेक और ब्रेक कर सकती है. ट्रू. सो सो थ्रू. मे बी एनी या इंसिडेंट्स ऑफ योर लाइफ, जो भी तुमने करा होगा, कुछ हुआ होगा, या फिर प्रॉब्ली यू माइट हैव हैड अ एक स्टोरी टू बैक इट अप. एंड मेरे ख्याल से यूनिक का मतलब एक ही होता है कि तुम ना थोड़ी अपनी स्टोरी बना दो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, राइट. मे बी कुछ क्लीशे चीजें हैं दैट माइट वर्क फॉर यू, इज लाइक यू कैन टॉक अबाउट माय नेम इज दिस, उसका मतलब ये होता है, ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है. या फिर यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मे बी आपका जर्नी कैसे रहा, व्हाट ऑल हिकअप्स यू हैड पहले लाइफ में, how you overcame that, and then eventually you can turn it to IIM Ahmedabad being my dream and something like that. Because ये जो 1500, मतलब नॉट 1500, बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, बट स्पेसिफिकली जो वहां पे बच्चे आते हैं मुझे लगता है कि 90% ऑफ द बच्चा लोग IIM अहमदाबाद के लिए ऑलवेज ड्रीम करता है. सो कॉल आना भी बहुत बड़ी बात है. सो आई थिंक मेक इट इन अ स्टोरी फॉर्मेट, डोंट गिव देम द सेम मोनोटोनस स्टफ, राइट. दैट्स अ पार्ट ऑफ या योर इंट्रोडक्शन. ऑन द एंड अदर. ऑल्सो आई विल ब्रिंग वन मोर पॉइंट. हाँ, सो गो अहेड. ब्रिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. मतलब कभी कभी क्या होता है कि interviewer will also give their introduction. Sometimes if they say कि let's say they are belonging from Bengal, West Bengal, let's say, and if you have worked there or if you had your college there or something connected with that, so you can bring that as well. वो interviewer के साथ अगर आपका connection बैठ गया, then interviewer will remember you for sure. So वो एक presence of mind भी रखना कि what interviewer is also saying. कूल है. ये हैंडशेक वगैरह करना जरूरी है अंदर जाके, थोड़ा हीरोपंती करना जरूरी है, हैंडशेक वैंडशेक कर लिया, हाय बाय बोल. For my case, it was a COVID time, so it was physical, but अच्छा they were in different room, and then we connected over video call. अच्छा So अच्छा. ये जो हैंडशेक वाली चीज थी वो थी नहीं, but handshake is a really good gesture considered in business setting. So राइट. if you have an opportunity, definitely do that, and like it should be very firm. It should not look like a weak handshake. कूल है. ये पीआई में ना एक चीज होती है कि इज इट ऑलवेज द केस केवल है कि तुमको पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अगर कुछ बाउंसर आया तो पहला ही क्वेश्चन अगर जीके का आया तो ऐसा कभी होता है? बिकॉज आई हैव सीन पीपल लाइक पहला ही क्वेश्चन जीके का डाल दिया. ऐसा हाउ डू. हो सकता है इफ यू हैव समथिंग इन योर प्रोफाइल, और इफ यू लेट्स से तुमने एडब्ल्यूटी में कुछ ऐसी चीज लिख दी कि जिन पे दे गेट अम्यूज्ड और समथिंग, तो फिर आ सकता है. वरना फिर कभी कभी क्या होता है कि दे डू नॉट डायरेक्टली आस्क योर इंट्रोडक्शन. कभी कभी दे मे टेक इनटू सम अनदर डायरेक्शन, बट टू मेक योर स्टोरी इट्स ऑल्सो योर ड्यूटी टू टेल इन सम वे. लेट्स से जीके का क्वेश्चन आ गया, बट उसके बाद आप उनको बैकअप कर सकते हो कि मुझे ये चीज क्यों पता है, बिकॉज ऑफ दिस दिस पर्टिकुलर माई लाइफ एक्सपीरियंस. तो यू आर टेलिंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ इन दैट वे. और देयर माइट बी अ सिनेरियो, अगर आपको मान लो कोई एक ऐसा कोई प्लेस पूछ लिया, मतलब लेट्स से नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ साइड का कोई प्लेस पूछ लिया, एंड इफ यू रियली डोंट नो यू कैन ऑलवेज से दैट आई डोंट नो दिस बिकॉज़ आई बिलोंग टू या मुंबई,
वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो. सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ खींच के लाना पड़ेगा आपके पास. आपको कोई वहां पे आके फीड नहीं करने वाला है, कोई आपको बताने नहीं वाला है. सो आई थिंक दिस इज समथिंग यू नीड टू मेक वेरी यूनिक. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, when we talk about IIM Ahmedabad, again I will be telling them, but I want to hear it from you. कितना डिटेल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है? जैसे आई एम ऑफ द ओपिनियन के इफ यू आर सिटिंग फॉर IIM अहमदाबाद का इंटरव्यू, देन यू शुड बी नोइंग वेरी वेल कि मुझे अगले 2 साल में क्या करना है, 5 में क्या करना है, 7 में क्या करना है. What sort of company I want to join in, what sort of domain I want to get into, and उस domain का hierarchy I should be knowing thoroughly. If I don't know today, learn it and then go for PI. Do you second this point? Like, do you have anything to talk about it? Yeah, definitely. मतलब, I will give you an example. कि let's say they ask कि where do you want to, where you are seeing yourself in 5 years. तो लोग क्या बोलते हैं कि I want to be a manager. या कौन सा manager? Then you say let's say general management. Then you say अच्छा general management में क्या करना है? Then you say let's say I want to work into Reliance or maybe so you want to work into energy sector. Then you say कि अच्छा ठीक है energy sector में क्यों काम करना है? अच्छा एनर्जी सेक्टर में भी बहुत सारे रोल्स है, प्रोक्योरमेंट हो जाता है, सप्लाई चेन हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है. कहाँ जाना है, कौन से प्रोक्योरमेंट में जाना है. सो Right. गो विथ एवरी मिनट डिटेल्स अबाउट योर करियर एज मच एज पॉसिबल. अगर इतना भी मतलब समटाइम्स इट्स ओके कि यू से अच्छा आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट लेट से पर्टिकुलर फार्मा और एग्रीकल्चर और एनर्जी और समथिंग, बट बी श्योर कि एटलीस्ट ये 2-3 सेक्टर्स है जहां आई वांट टू गो. वो जो 3-4 लेवल्स डाउन है वहां तक तो एटलीस्ट श्योर रहो एंड बैक इट अप. व्हाई यू आर श्योर? मे बी इट्स रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, मे बी इट्स नॉट रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, बट यू वांट टू एक्सप्लोर. और ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि यार काफी लोगों को होता है कि ठीक है मुझे पैसे बनाने इसलिए आई एम गोइंग इनटू एन MBA. यार वो तो सब लोग ही करने आते हैं. सो make it more unique, make it more personal to your profile, why you want to do an MBA. Right. To talk about this guys, when it comes to Blackie ना, या फिर जो जाने माने दिग्गज भी स्कूल्स है, FMS, XLR है, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज्यादा वेलकम होता है कि एक इंजीनियर आके मुझे बोल रहा है कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंक में जाना है. दे वेलकम दिस काइंड ऑफ पॉइंटर्स. एक HR या BBA का बच्चा जो सिम्बाइसिस से है, मेडी बाई SRCC से है, वो कह रहा है मेरे को ऑपरेशंस में जाना है, या फिर वो कह रहा है मुझे जनरल मैनेजमेंट में जाना है, जो GE का प्रोग्राम है, आदित्य बिरला का प्रोग्राम है, वगैरह वगैरह. सो दे वेलकम ऑल दिस थिंग्स, सो दे डोंट जज यू. टीयर 2 में क्या होता है, मोस्टली टीयर 1 में भी अगर मैं बात करूं, न्यू आईएम्स या फिर बेबी आईएम्स, वहां पे चीजें जज होती है कि यार मतलब तू तो इंजीनियर है, तू बोल रहा है मेरे को फाइनेंस में जाना है, कोई कनेक्शन ही नहीं है. तू HR का बंदा बोल रहा है फाइनेंस में जाना है, कोई कनेक्शन नहीं है. सो द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस ब्लैक है ना कि यहाँ पे एक चीजें वेलकम होती है. आप आराम से स्विच मार सकते हो, आप कुछ भी इर्द गिर्द उल्टा पुल्टा जा सकते हो, बिकॉज इट इज अस्यूम दैट एवरीबडी हु गेट्स कॉल फ्रॉम दीज टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस आर रियली ब्राइट माइंड्स. तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से बोल सकते हो. बट बी वेरी वेरी गुड विद दोस आंसर्स. यू शुड हैव अ क्लैरिटी. नहीं है क्लैरिटी तो हम दे देंगे क्लैरिटी, उसका कोई लोड नहीं है. हम बैठे उसी लिए, so उसका टेंशन है. बोल क्या पहले. हाँ, जस्ट वन मोर थिंग, तो सो मेक इट मोर रियलिस्टिक एज वेल. मतलब अगर आप टीयर 2 में जाके बोल रहे हो कि आई वांट टू गो इनटू टीयर 2 टीयर 3 में जाके बोल रहे हो कि आई वांट टू गो इनटू गोल्डमैन फ्रंट एंड, तो वहां पे जाके ये चीज मत बोल देना. वो घर तक छोड़ देगा तुमको, तू आ जा. आई नीड टू शो यू द राइट पाथ. सो टीयर 2 में ये सब नहीं चलेगा, बट वज में ये चलता है. विल टॉक अबाउट दैट आल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू. ठीक है. अब ना सबसे बड़े पंगे हैं कैवल्या, जो शायद से तूने भी फेस करा होगा, मेरे टाइम पे भी फेस हुआ, जीके. अब यार जीके में पंगे है, वो कुछ भी पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे आंसर करेंगे? मतलब हाउ डू यू डील विद दिस जीके क्वेश्चन? जीके में दे विल आस्क डेफिनेटली, मतलब दे कैन गो इनटू एनीथिंग, बट इट्स ऑलवेज ओके टू से. मतलब मुझे भी आई थिंक 4-5 चीजें पूछी गई थी जीके में विच आई वाज नॉट श्योर. सो आई ऑनेस्टली सेड अपफ्रंट कि मुझे इस एरिया में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, सो आई डू नॉट हैव दैट मच नॉलेज. इज इट ओके टू से ओके, या डेफिनेटली परफेक्टली ओके टू से नो. बट हाँ, उसके बाद यू कैन से कि लेट्स से दे आस्क कि इंडियन इकोनॉमी में व्हाट आर योर व्यू ऑन नेक्स्ट बजट. सो यू कैन से नो, बट यू कैन से कि मुझे इकोनॉमी का इतना आइडिया नहीं है, बट आई एम मोर ओके विथ फाइनेंस और आई एम मोर ओके विथ सम अनदर सेक्टर. फिर वो लोग फिर वहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे. So that's how you can change the question. Yeah, that's how you can change your path. But अगर आप कुछ बोलते हो कि ठीक है मुझे लेट्स से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में पता है,
तो उसके अगर आप बोलते कि यू पता है तो फिर उसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ, तो आई थिंक पहले ना वो एक टेम्परेचर चेक करते हैं कि तू आ, तू बैठ, यू टेल मी अबाउट हाँ योरसेल्फ एंड यू टेल मी, आप तुम्हारे मुंह से तुम पहले बताओ तुमको क्या क्या आता है, फिर उसके बाद विल स्टार्ट। सो आई थिंक इट्स अ टू एज वर्ड, इट माइट वर्क फॉर यू, इट माइट नॉट, बट इट विल बी वेरी 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 गुड विद इट। नाउ माय हाँ। सेकंड क्वेश्चन, कैवल्या, एकेडमिक्स, क्या करे यार एकेडमिक्स का, बहुत परेशानी होती एकेडमिक्स का, या एकेडमिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दो टाइप के एकेडमिक्स हो गए। पहला तो टिल ट्वेल्थ, एंड सेकंड इज ट्वेल्थ से लेकर आपका अंडर ग्रेड तक। है। ओके। पहले आई वुड से अबाउट अंडर ग्रेड। सो ओके। अंडर ग्रेड में दो सब्जेक्ट ऐसे ले लो कि जहां पे यू हैड इंटरेस्ट, एंड सेकंड इज वो सब्जेक्ट अच्छे भी है, लाइक इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग टू फॉलो। ऐसे हम्म। कोई दो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो एंड गो इन मच मोर ग्रैन्युलर लेवल डिटेल्स एज यू कैन, कि हम्म। ये दो सब्जेक्ट पे कुछ भी आ गया मैं तो फोड़ दूंगा। अपार्ट हम्म। फ्रॉम दैट बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स है उसके बस ऊपर ऊपर से नॉलेज ले लो कि ठीक है, एकदम हम्म। इजी क्वेश्चन आएगा तो आई कैन डू, बट हम्म। डिटेल्ड क्वेश्चन आ गया तो मैं बता दूंगा कि दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट, या फिर मुझे अभी याद नहीं है, इट्स पास्ट, बट हम्म। आई एम गुड विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मुझे उसमें से पूछ लो। ओके। ओके। और टिल ट्वेल्थ में मेन मैथ्स देख लेना थोड़ा। इफ यू आर नॉन इंजीनियर या फिर ऐसा कुछ, मतलब नॉन साइंस बैकग्राउंड था, तो टिल टेंथ का मैथ्स तो यू विल हैव ऑलरेडी डन, बट स्पेशली इट्स फॉर इंजीनियर्स। जो इलेवन ट्वेल्थ का जो मैथ्स होता है, जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो थोड़ा देख लेना, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली फॉर आई एम कैलकाटा। हम्म। ओके। अहमदाबाद में भी दे माइट गेट क्वेश्चंस ऑन अहमदाबाद स्टार्ट। में भी दे कैन आस्क। और अहमदाबाद इज मच मोर फोकस्ड ऑन एकेडमिक्स एज वेल, मतलब इफ आई कंपेयर विथ ABC, हम्म। Ahmedabad is much more focused into academics once you get into the B school. So they want to be really sure that you are an academics person. आपकी वो इमेज नहीं दिखनी चाहिए कि अंडरग्रेड में तो आप बंक मार रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। हाँ ना, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। दिस या इज द ओनली बी स्कूल जहाँ पे, एंड आई लव दिस फैक्ट अबाउट ए इज दैट के वहाँ पे पढ़ाई को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। आई मीन आई नो एवरी बी स्कूल इज रिगरस, बट आई एम अहमदाबाद के जैसा रिगर कहीं है नहीं। एंड दैट इज द रीजन लोग ए छोड़ के कैल में भी जाते हैं कभी कभी, बिकॉज चिल मारना है। लोग कभी कभी बी में भी जाते हैं, बिकॉज जितना पढ़ाई एक साल में जितना सब्जेक्ट्स ए वाला करता है उसका आधा सब्जेक्ट्स वो बी में कराते हैं। सो पीपल लीव एंड इवेंचुअली गो, बट ए तो ए है, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन एक्सेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बी भी रहेगा, सी भी रहेगा, पर ए का लेवल ही अलग है। इन द नेक्स्ट 100 years मुझे लगता है ए को कोई रिप्लेस कर पाएगा, एंड वही बात मैं आज इनके साथ कर रहा था। वंस यू आर फ्रॉम आई एम अहमदाबाद, यू ऑलवेज स्ट्रेस ऑन द अहमदाबाद वर्ड कि यार मैं आई एम ए से हूँ। सो कीप दैट इन माइंड गाइस। I think we are towards the closure of the session. I hope we could, help you with this. We shared a couple of insights, and Keval, we will also be talking about life post IIM-A. Last question, अभी मुझे engineers से याद आया. So a lot of engineers are not really aware about, let's say, it's not about engineers, but it's for everybody. Maybe commerce students sometimes are not good at it. Budget हो गया, economics हो गया, finance हो गया, right? What's happening in the country हो गया. Do you think इनको ये पढ़ना जरूरी है, ये concepts, jargon याद रखना जरूरी है? नॉट एवरीथिंग, मतलब इट्स ओके कि ठीक है आपको इकोनॉमी के बारे में नहीं पता है, बट एटलीस्ट कोई एक टॉपिक ऐसा उठाओ इन बिजनेस वर्ल्ड विच यू आर ओके। आई नो फॉर स्पेशली फॉर engineers, let's say, उनकी प्रोफाइल विल बी मच मोर इनटू टेक्निकल, एंड नाउ यू आर गोइंग इनटू द बिजनेस वर्ल्ड, तो एटलीस्ट बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। लेट्स से जीडीपी क्या है, हम्म। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्या है, व्हाट इज द हाँ, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, जो बेसिक्स होते हैं एटलीस्ट बिल्कुल। उतना तो यू शुड नो। एंड यू कैन डू दिस बाय रीडिंग द बिजनेस न्यूज़पेपर्स। हाँ, आई मीन विल टेक केयर ऑफ इट। सो जितना भी तुम्हारा या इकोनॉमिक्स वाला वगैरह पार्ट है ना, वो मैं देख लूंगा। सुप्रीत है, शी इज अगेन फ्रॉम आई एम अहमदाबाद, कैवेला की जूनियर है वो, शी इज इन सेकंड ईयर नाउ, सो विल टेक केयर ऑफ दैट। बाकी इंजीनियरिंग वाला पार्ट, आई थिंक वी हैव geeks like कैवेला इज देयर, गौरव इज देयर, मनोहर इज देयर, आई थिंक यश इज आल्सो देयर। ये सब लोग आपको हेल्प करेंगे कि आपको इंजीनियरिंग में क्या क्या करना है। सो मैकेनिकल के, सिविल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो विल हैव दैट बढ़िया प्रोग्राम। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद इट। नाउ एनी क्लोजिंग थॉट्स फ्रॉम योर साइड कैवेलिया, for all the call getters? for like, I do not have much to say, but just go with the positive mindset कि तुम तो फोड़ने वाले हो, मतलब दे इंटरव्यूअर्स आर देयर टू सिलेक्ट यू,
बस वहां पे जाओ, नेचुरली बात करो, दे आर ऑल्सो ह्यूमन. हम्म Do not get stressed out. Focus much more on your soft skills rather than the normal hardcore interview skills. That will help you out much more in the future as well, like not only in this interview but in any other interviews. हम्म cool है. Couple of questions. So again, now we will not disclose, but he's one of the MBB consultant. How's life as a consultant यार? How many hours you work? जरा इनको बताना. Because इनको लगता है कि ये सब सोशल मीडिया में होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता. Reality as well, yeah. Consulting is a much more hectic job. जब आप recently that meme got famous कि Narayan Murthy was telling about 70-hour work week. हम्म Consulting makes very much normal. मतलब I would say it's a much better work week when you have 70 hours to job to do. So those things will be there, but it rewards you. मतलब your lifestyle is really good. Um, Flights, five-star hotels, महंगे meals, and all those things. Those all things are sorted out. Apart Your from Insta will be that, taken care of. Don't worry. Your yeah, Instagram will be taken care of. You'll have a yeah. lot of stories to post. A lot of people If will you see have time, if you have time. हाँ, ये point है. ये point है. I know यार. I still don't have that much time. But yeah, IB and consulting मेरे ख्याल से are very rigorous. IB again, per week, 70, 75, 80 hours you will have to clock in. I know we had work on Saturdays and Sundays also. So one frame you have an IB guy talking to you, one frame you've got a consultant talking from you from the MBB. So and how about the 2 years? कैसे मतलब इनका अंदर क्या क्या होगा, कैसे होगा? How this 2 years going to be? Placement के बारे में थोड़ा सा बता देना, numbers if you can. uh-huh. So in the MBA as well, they are preparing you for your future life, for after your future life. So again, we said कि MBB and IBs में काफी ज़्यादा hectic रहता है and all. B school life is also going to be more or less similar. They are preparing you for you to become much more better. Placements wise, definitely. Ahmedabad में तो 30-ish you can expect an average package. अभी इस साल 100% 33 है ना? placements. Sorry. इस साल 33 है ना टच के एवरेज? 33 would be CTC. मतलब Oh, now is the place to yeah, more talking. yeah. If we talk, let's say base या something, whatever is your in hand, वो that will also be close to 25, 26 on an average. ठीक बाकी है, 100% placements will be guaranteed at ABC. Okay. A question. Who makes more money, IBs or consultants? IBs. Ah. ठीक है, thanks for being honest on that. ठीक है, nice. Guys, the floor is open for Q&A. Now, if you guys want to shoot any questions to me or Cavilia, more than welcome. Yeah, more than welcome. If not, then I will see you guys tomorrow again. And we'll have frequent questions, ठीक है? I'm not sure. मतलब those who are new to us, probably, well, I can probably give you a quick introduction. I think Kavella is also here, so Kavella can also add into this. 1 second. So this is going to be the entire, Bible for you. जो भी आपको करना है यहाँ से कर लो. This is going to be entire dashboard that will be given to you. ठीक है? I think Kavella, you had also used the same dashboard na, during your days. Yeah. Tell me about Yes. yourself and everything. Okay, Yeah. seniors हो, like juniors हो, everybody has used it. So I don't know, like if you have the dashboard, go ahead, start, working on the dashboard. जितना भी dashboard में कराया वो सब एक बारी चाट लो, रट लो अच्छे से. That will help. If you don't have it, get it ASAP and connect with us so we can start helping you, including me, Kavella, and the other team also. Is there any specific topic to prepare before interview? We'll take care of that. Don't worry about it. Kavella, एक question मुझे पूछना था. बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं. So the calls are out now, and you can log into the website, put in your CAT ka ID and your email, vagara vagara, and then they say there is a message that pops up, congratulations and all that stuff. But a lot of kids are saying that हमें ना वो email नहीं आया है अभी तक. हमें website पे Yeah. दिखता है कि वो बोला congratulations. So ये क्या scene है? Yeah. So again, हमारे साल में भी ऐसे ही हुआ था. अच्छा. Currently, they will only show in their website only. Emails will come after 7 days or 10 days or so. Okay. Emails में you will have all the details कि मतलब next steps क्या होंगे, what will be your reporting center and all. But if you are getting that message कि congratulations, that definitely means congratulations. मतलब है, पक्का है. So Yeah. don't worry. And by the way,
वो जो फॉर्म फिलिंग है ना आपका, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज वो 6-7 टैब्स होते हैं आपके। अभी आपको दिखेगा, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू पुट इन योर percentages and your medals and your whatever extracurricular, because I think A is very careful about it. वो आपका document verification होगा on the same day, isn't it, Kaivalya? या So डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन, कुछ भी गलत चीज या फिर हाँ, वो तो गलती से भी मत करना। true that, true that. So cool, eh? And Kaivalya would try to give some time on Saturdays and Sundays if he's not traveling. Even 1 hour would be more than enough, yeah, for the kids, Kaivalya. So he will डेफिनेटली आई be in वुड touch डू। with you. And thank you so much for taking some time out and joining this session, Kaivalya. Thanks to you and everybody, those who've got call from IIM Ahmedabad. बहुत बड़ी बात है, इट्स अ लाइफ टाइम, वन ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट आई वुड से। कन्वर्ट वगैरह बाद में होता है, एक ना प्रिंट निकाल लेना कलरफुल मस्त, और उसका एक फ्रेम बना के रख दियो कि मेरा कॉल तो आया था IIM अहमदाबाद से। ये वो फीलिंग होती है, इजंट इट कैबल? अहमदाबाद का एकदम स्वैग अलग है यार। आई स्टिल हैव माय कॉपी दैट प्रिंट आउट विथ मी। Is it? या Awesome, awesome. Perfect, guys. That's it from our side. I hope you loved the session, and we'll be more than happy to sort of help you. There is a free group of WhatsApp. If anybody wanna join in, can join in, and the mentorship will keep on happening there. Cool यार, God bless you all. बहुत मेहनत करी आपने कैट के लिए, अभी आप यहाँ तक आए हो, बस थोड़ी सी आपको और मेहनत है, फिर आप IIM अहमदाबाद में जाओगे, फिर हम कहेंगे बस थोड़ी सी और मेहनत है, फिर प्लेसमेंट होगी, फिर हम कहेंगे थोड़ी सी मेहनत है। So guys, keep working hard, keep hustling, and God bless you all. Thank you so much, Kevin. Sir, take care. I'll see you in या Mumbai very soon. Bye bye. Bye डेफिनेटली। everybody. Take care.